Hi everyone and welcome to PrepFusion. We're back with another Ask Us Anything. Soon Himanshu sir also will be joining. He's just in some other work. Yeah, let us know how is your exam preparation going? Like what are you feeling? Um, what are your thoughts? Like which areas are you lacking in? Like maybe you can guide you. Like uh, what are the things that you are not able to pass. So yeah, let us know in the comments below or like in the chat below. We will definitely suggest some strategy or something, right? And have you guys started your test series and stuff? You guys can let us know. So we'll just wait for 2-3 minutes for all the guys to join and then we will start. Yeah. Happy New Year. Happy New Year, Shreet. I hope I am audible, right? Like you guys can see me and hear me. Yeah, analog communication one shot. It will not come on YouTube. Okay, analog communication has been uploaded on the app. I don't know if it will come in YouTube. What do we need to do in the last 30 days? Balaji, mostly revision, like 50-60% of the time revision and 40% of the time test series. Okay. So you can, for now, you can write the subject wise test series. You can also write the concept X test series. You can start off like the deadline you can set for full length test series is 18th of Jan. You should be done with at least one full length test by 18th of Jan. Okay. So then after that, only mostly test series and your revision. Shred, like for DC part, I don't think you need much of like DC part is very simple and very easy. So in the RPOIQ playlist, there is a video there, a collection of like I think almost around 100 questions, like 100 good questions. So you can watch that and revise. Okay, I think that should be more than enough. Uh, Stinty, that video is already uploaded. Most important topics video is already uploaded. Just search on YouTube most important topics for GATE 2026 PrepFusion. Two videos will come up. One will be for GATE EE, one will be for GATE EC. Okay, you can already, those videos are already uploaded. You can watch them. Laplace transform in mathematics, it is not necessary, but Laplace transform will be used in control systems. So basic things you should have, basic knowledge of Laplace transform, you should know what is initial value theorem, what is final value theorem, what are the basic Laplace transform of standard signals, right? That will be used in control systems. Yeah, Gautam, there is special discount for new year. Just apply the code, you can see in the bottom. Just apply the code HNY and you will get the maximum discount on all our courses and on all our test series. Okay, so there is currently huge discount running on all our courses. Why it is always feeling, I don't understand, Sanmukh, your question. Why it is always feeling like revision? I don't understand. Can you reframe your question properly? Like he want to say that he always feels like that he needs to revise the subject. Yes, Uh, it would feel like that. that happens with me also. Like that will happen with everyone. So even if I have taught a subject like 2 months back, if I don't revise the subject, I will not be able to solve all the questions of the subject, right? And that's natural. So don't worry. This feeling will go on till your examination. So it's natural. So don't take stress over that. Yeah. So Manu is saying didn't completed the communication, and I'm thinking to study 2 hours every day till January, and thinking to write test series from Jan 20th. I revise other subjects. Yeah, okay, it is fine. Like Manu, but just like if you are comfortable with all other subjects, then you can do this particular thing that you are studying 2 hours every day communication. It is fine, and rest of the time you should be giving to the revision of other subjects. So in that manner you can proceed, and yeah, that's it. It's a good strategy. Yeah, Saint Hill, like we will do it. We will do it. Already we are doing it. No, RPYQ series is already running. A lot of important concept, a lot of important questions are already coming, right? So already we are doing it. So just follow RPYQ series. Their communication is there, analog is there, and network is there. All the electrical core subjects are there. So
For EMFT and EDC and communication, something needs to be done that I will do. Communication price is already very low, bro. Okay, already very low. How much would you want me to reduce it? I think it would be available in less than 500 rupees for Gate 126. You would be having 3 months of access. No, even if you are preparing for 2027, 3 months access is there. You can prepare. Roughly around in 500 rupees, you are getting communication. I don't think less than that. I don't know what I would do. Okay. Gate DA, Anish, any idea? I don't have, because the benefits of Gate D I really don't know, because previous year multiple students appeared and they were not able to get any seat in the institutes, in the IITs. So you can Yeah. ask someone else. So, yeah, Gate DA, please ask someone. You can contact someone on LinkedIn. He can guide you. But in Gate DA, I have heard that like roughly around 300 rank is required. You need to get 300 because there are lesser seats. This is what we know. We don't know much about Gate DA. Okay. Currently in final year, completed 2 network months ago. Code discarded. Now need to revise and low fusion special assignment. Most shifts lecture digital encoder. XYZ engineer, like what is your complete progress? You let me know. Okay. And we also arrange that one-to-one session as well. No, you can also Yeah, join there. that was Okay. shared as well in the group. I hope For you're the in the group, this right? session is not for our paid course student. No, this is for YouTube students. Paid course student, bi-weekly we connect. So, but there I will be able to guide you better, because there you can also speak, I can also speak. So there would be one-to-one interaction there. So please join that particular session in next time. Here I'm telling you, like, first you let me know what all subjects you have done. Network, analog and digital. Only this much you have done, or anything else also you have done. So tell your complete progress. He wants to qualify. How to qualify, sir? To qualify the exam. Qualify. So mathematics and aptitude you can do. Whatever that you are studying, just complete that, and along with that you can do mathematics and aptitude. Then you will be able to qualify. One subject that you would suggest which one can study in coming month, that would be a great score booster. I cannot suggest in particular. Okay, it would It depend on the depends. student to student. It's what have he studied, what he hasn't. So it will depend. Yeah, particularly we cannot tell. Yeah, Sir, can you? 2027 roadmap, it should come tomorrow or day after tomorrow. Okay, 2027 roadmap would come. GATE paper, you are not studying EMFT and analog electronics. Both of the subjects combined would be coming for 20 marks. So 80 marks you will be able to attempt. Now, out of 80 marks, how much marks you score? Out of 80, if you are scoring 80, then you are getting under 10 rank. Okay. And out of 80, if you are scoring 60, then under 500 is surely possible. So it's up to you. Out of 80, how much do you score? Okay. Both of the subjects combined would be coming for 20 marks. यार अनीश, एक बात बताना, ये जो वेबकैम होता है, इसको चार्ज करना पड़ता है क्या? नहीं, नहीं करना पड़ता ना, ठीक है. क्या बोल रहा है? अरे ये थोड़ी मैं बाद में बताता हूँ. ये डिफरेंट लाइट थ्रो कर रहा था कुछ. I completed syllabus for, so now you can stop with the POQs and you can give more focus on the test series. Okay, you can do subject wise test series, so you can give more focus on that if you're feeling slow and you're from mechanical. If you're from mechanical, why, how you came to know about our channel? वही मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से, मैथ, हाँ, एप्टीट्यूड हो और सकता मैथ्स है, से. हो सकता है, हाँ. सर विद मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सिग्नल सिस्टम, DLD and TEDC, best possible rank that we can. I can tell you the number of marks. Okay, maths aptitude, signal control system, DLD and TEDC, 3, 3, 6, 7, roughly around 70 marks you can attempt. With these subjects, roughly around 70 marks you can attempt. Meme Hub, sir, I did not complete communication, EMFT and EDC. सर कितने अटेम्प्ट कर सकता हूँ? 75 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो यार आप. आपने अगर कोर सब्जेक्ट छोड़ दिया है तो बेस्ट केस होगा 75 मार्क्स, ठीक है ना? वरना 70 भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन वगैरह से ज्यादा कर ले. आप थोड़ा कर लो ना. अगर आपने सिग्नल्स किया तो एटलीस्ट एनलॉग कॉम तो कर लो, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस कर लो, ठीक है? क्योंकि ये सवाल इतने टफ नहीं आते और 4-5 नंबर के आ जाते हैं. तभी मैंने वो कोर कैप्सूल बनाया था, ठीक है? कोर कैप्सूल में जितना जितना बताया ना उतना कर लो यार थोड़ा सा. तो छोड़ना नहीं, मतलब इतना सब मत छोड़ना, क्योंकि आपने और सब्जेक्ट भी किए हैं, ठीक है? फिर भी 70 मार्क्स आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना? 70 Look, प्लस का. Senthi, we don't know what this year will come. Previous year, yeah, that was the pattern, but this year no one knows, right? They can change the pattern, so it's all up to them. So we are not God that we will be able to like predict what will be the pattern this year.
नहीं देखो, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं आता यार, पता नहीं कौन से सीनियर ने नहीं, कुछ आपके आए सीनियर थे, ने कुछ 1-2 आया था वो एमएसक्यू, मेरे को जितना याद है 1-2 थ्योरी का 1-2 आया था, 1-2 आया था थ्योरी का किस में था, एमएसक्यू कौन रिलेटेड। से सब्जेक्ट में, कंट्रोल में? यार मेरे को याद, कंट्रोल में नहीं, एनालॉग में भी 1-2 तो पूछ लिया था यार, मेरे को जितना याद आ रहा है। एक एक ही था एमएसक्यू जो थ्योरी का था, मेरे को याद है, एक तो था। कौन सा सब्जेक्ट का था मेरे को याद नहीं, लेकिन अच्छा। था एक, ठीक है। लेकिन वो था, लेकिन इस साल क्या होगा वो बोल नहीं सकते ना, वी कैन नॉट कमेंट व्हाट विल हैपन दिस ईयर। बीआरसी के पीवाईक्यू नहीं मिलते हैं श्रेया, ठीक है, बीआरसी अपना पेपर रिलीज नहीं करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीआरसी में 50% जो सवाल आएंगे ना वो गेट पीवाईक्यू होंगे, 50% बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब गेट पीवाईक्यू सीधा सीधा गेट पीवाईक्यू, चेंज भी नहीं हुआ सवाल। तो गेट पीवाईक्यू कर लो आप, आराम से बीआरसी के का रिटर्न निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पेपर आपको सवाल मिलेंगे नहीं, कहीं पे भी मिल गए तो मतलब वो क्या करेंगे, कोई और एग्जाम के सवाल को बीआरसी का पीवाईक्यू बता देंगे, बट बीआरसी का पीवाईक्यू कभी बार आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बीआरसी के लिए आप गेट पीवाईक्यू कर लो, इजी वाले ही कर लो, ठीक है ना। मोर कंफ्यूजिंग ट्रांजिएंट। बालाजी, आप अपना हाँ। 37.35 है, तो आप रैंक 10 के मार्क्स बताओ मेरे को, उससे कंपेयर किया करो। लाइक दिस इज आई एम टेलिंग टू एवरीवन, लाइक पीपल वुड बी आस्किंग सर आई एम गेटिंग दिस मच मार्क्स, दैट मच मार्क्स, इज दैट गुड इनफ और नॉट? सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज दैट you see the rank list. In the rank list, the rank 10 guy is getting that much, no, let's just say rank 10 guy is getting 60 marks and you are getting 55 marks, that means you are doing very well, okay. Always compare with the rank 10 guy, not with the rank 1. Rank 1 could be out of the box, he might have cheated, whatever it is, we cannot tell. But rank 10 is the average of toppers. Okay. Rank 10 guy is the average of toppers. Okay. Let me tell you one thing. During my attempt, I also used to get rank around rank 10 only in the test series. So eventually I got a very good rank. So just take your difference as rank 10. How much marks he is getting with respect to that, what I am getting. Okay. Yeah, Nishu, you were saying something. ट्रांजिएंट, समवन इज कंफ्यूज इन ट्रांजिएंट, इसके लिए कुछ होगा तेरे पास? डू यू हैव एनीथिंग? श्री ट्रांजिएंट एनालिसिस में कंफ्यूज है श्री बोल के Up, ऐसा। Shri, like you can study from PrepFusion, or if you are confused here, then you can study from some other resource as well. Okay. But if you study from Just somewhere else, then the question that will come you will maybe it not be will confused. differ. Like I'm telling you, you will never be confused. You will be confused in transient only if you study from here. Otherwise, you will not be confused because they will never But let you get confused. yeah, but you will not be able to solve, like you will be able to solve, but it will take you more time to solve the question in the actual exam. That is the only thing. In the actual exam, you will not be able to solve. That's the thing. Because confusion in transient would only come if you study it in a good manner. If you don't study it in a good manner, then it will never come. You can simply apply Laplace transform, you will get the answer. But Laplace will not work in the examination. Let me tell you. Okay, Laplace never works in the examination. Sir, I'm left with communication and EMFT. I will be starting communication now. We'll study till last week of January. How can I cover EMFT? From core capsule, you can cover. Whatever that I'm telling in core capsule, that part you can cover from EMFT. Okay. Let me share in the Telegram. Earn up 15 plus. Communication 15 plus. Communication would come for 15 plus. 15 plus. I'm left with half of EMFT, planning to finish and give marks. During revision, I got distracted easily. Any tips? Don't get distracted. Just keep on studying. At the time when you feel like that you are getting distracted, try solving questions. Okay. Whatever the notes that you are studying, in the notes, whatever the solved question are there, solve that on your own in your rough notebook. Even the solved question you need to solve. Just your pen should be working. Even when we are doing the revision, our pen should be working. If our pen is not working, then we get distracted. We try thinking too much or whatever we want to do, we get distracted only when our pen is not working. If our pen is working, then we will never get distracted. So the only way to remove that distraction is you need to use your pen. Okay. Gangesh, he's saying he has given all our network analog digital tests. No, you don't need to give the topic wise test from ADC if you have already attempted ours, but make sure you give the full length test, okay? Full length test of either ADC or ACE, whatever institute you want to give. So make sure you do that. Topic wise, you don't need to attempt. ये कुछ भी नहीं का क्वेश्चन है सर, इसी कैप्सूल की प्लेलिस्ट करके एग्जाम क्लियर हो सकता है क्या? एग्जाम क्लियर का मतलब क्या बोलते हो आप? अंडर 1000 क्या है टारगेट, क्या है आपका? इसी कोर कैप्सूल ही कैसे होगा भाई? 4 सब्जेक्ट ही था उसमें। कोर का मतलब क्या होता है? 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, 4 सब्जेक्ट से क्लियर कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बट कट ऑफ ही क्लियर करनी है तो वो 4 सब्जेक्ट क्यों करने हैं आपको? कोई बात नहीं, आपने वीडियो नहीं देखी ना इसी कोर कैप्सूल की, आप पहले वो वीडियो देखो, उसमें मैं सब कुछ बोलता हूँ कि किसके लिए टारगेटेड है। पहली लाइन मेरी कोई भी वीडियो ये होती है कि किसको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। मैं कभी ये नहीं चाहता कि मैं लाइव सेशन में आगे ये सब चीजें डिस्कस करूँ। तो आप आराम से देखो कि
उसमें बता देगा किसको वीडियो देखनी है और इस वीडियो से आपका क्या आउटपुट निकलेगा वो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना? हाँ तो आप वो पहले देखो। सर Madhur, मेरा yes डिजिटल we और EDC uh, हाँ, Madhur, Manish, yes या we do take. give a guidance if you purchase our Titans batch. We have 1:1 guidance, or if you have purchased any other batch, you can join our doubt solving WhatsApp group. There also you can ask for anything. सर मेरा डिजिटल EDC बच्चे हैं, बट मैंने लास्ट ईयर पढ़े थे। इस मंथ में मॉक के लिए प्लानिंग कैसे करूं? 1 डे गैप, 2 डे गैप। देखो मॉक की प्लानिंग का ना मैं एक शेड्यूल आप लोगों को दे दूंगा कि कब से करना है। ये पूरा शेड्यूल मैं बता दूंगा, वो मेरे हिसाब से बताऊंगा। बाकी एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसको कैसे प्लान करना है। मेरे हिसाब से चलना है तो देखो, डिजिटल EDC आपने छोड़ रखे हैं, लास्ट ईयर पढ़े हो भाई, तो EDC तो देखो मैं ना पढ़ू ना एक साल तो मैं भूल जाऊंगा पूरा, ठीक है? तो ये मान के चलो आप EDC भूल चुके हो। आपको आता होगा लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा EDC। आप ये मत सोचो लास्ट ईयर पढ़ा था तो मेरे को आ गया। डिजिटल के साथ भी सेम है, डिजिटल भी भूला जाता है, ठीक है? दोनों सब्जेक्ट इतने टफ नहीं है। EDC चलो कंपैरेटिवली डिजिटल से ज्यादा टफ है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप वो पढ़ो, 15 दिन लगा के बढ़िया से पढ़ो दोनों, क्योंकि आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना। तो उसके बाद आप स्टार्ट कर देना 18 जनवरी से फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है ना? 18 जनवरी से फुल लेंथ मॉक स्टार्ट कर देना। लेकिन अभी 15 दिन वो दोनों सब्जेक्ट करो, और साथ ही साथ जो पहले पढ़े हुए सब्जेक्ट है उनको रिवाइज भी करते चलो, ठीक है? तो ये मेरा गाइडेंस रहेगा। 18 जनवरी के बाद फिर 2 दिन छोड़ के 2 दिन टेस्ट देते रहना। बट ये मतलब इन जनरल नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये केवल आपके लिए बोल रहा हूँ। बट इन जनरल मैं एक प्लान दे दूंगा सबको अभी, शायद 2 या 3 तारीख को मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वेयर आई वुड टेल यू दैट हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड हाउ which what should be the frequency of attempting the mock test. That video I will upload. Yeah, silicon, which topics to concentrate for power electronics, rectifiers and choppers. Okay, these two topics, you don't have much formulas, but if you know the concepts, you will be able to solve it. Okay, these two topics are most important. यार आप ये सब नाम रखोगे मुर्गा छाप पटाखा, तो मैं आपके रिप्लाई कैसे दूंगा? मुर्गा छाप पटाखा क्या होता है? और इतने भी बढ़िया नहीं होते वो पटाखे वैसे, ठीक है? तो अब मैं कैसे मुर्गा छाप पटाखा है सर, आई एम गेटिंग 50, ऐसे थोड़ी नहीं, थोड़े बढ़िया नाम रख लो ना यार, ठीक है? ठीक है, फिर भी मुर्गा छाप पटाखा कह रहे हैं कि 40-50 मार्क्स आ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में, और सिग्नल एनालॉग का रिवीजन बाकी है। इंस्ट्रूमेंटेशन हाउ यू कैन इंप्रूव। सिग्नल एनालॉग का रिवीजन करो भाई, आपके पेपर में सिग्नल एनालॉग आएगा 25 मार्क्स का इंस्ट्रूमेंटेशन में। इंस्ट्रूमेंटेशन, इफ यू आर समवन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन, then your non-core subjects are very, 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 very important. Okay, 40-50 marks, you are doing good, but revise your notes and like just study in a good manner. Like Yeah, Anish, you and so wanted to add something? like controllers and compensators. This topic is Yeah, very yeah, important for you guys. So make sure you study that. yeah. So just revise it and then keep on writing down the test series. You are actually doing very good. Okay. इसमें 2 3 4 बहुत लो मार्क्स आ रहे हैं। मिशन गेट 202 क्या है सर? मैंने अभी तक 3-4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं, बट लो मार्क्स आ रहे हैं। मॉक एनालिसिस में भी काफी टाइम लग रहा है, ज्यादा बहुत ज्यादा क्या और क्वेश्चन आते हैं, भी नहीं बन रहे सर, क्या करूं? देखो अभी बहुत लो मार्क्स आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा लो, तो अभी फुल लेंथ टेस्ट मत लिखो, ठीक है ना? कोई मतलब सेंस नहीं बनता फुल लेंथ टेस्ट का, ये लिखते जा रहे हो मार्क्स कमा रहे हैं, ठीक है? पहले अपने सब्जेक्ट इंप्रूव करो। कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि 3 दिन लो एक सब्जेक्ट को लो, पहले तो 5 दिन बोला था मैंने उस वीडियो में, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, तो 3 दिन एक सब्जेक्ट उसको इंप्रूव करो, फिर वापस 3 दिन दूसरा सब्जेक्ट उसको इंप्रूव करो, उसके बाद फुल लेंथ मॉक लिख लेना, ठीक है ना? सवाल आते हुए भी नहीं बन रहा है, तो इन सब का रीजन यही है ना कि आपके सब्जेक्ट बेटर नहीं है, आप डायरेक्टली फुल लेंथ में जंप कर रहे हो। जब मैंने मेरा अटेम्प्ट दिया था तो इस समय तक मैंने फुल लेंथ स्टार्ट भी नहीं किया था, 1 जनवरी को मैंने मेरा फुल लेंथ लिखा था। तो आप अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो फुल लेंथ मॉक की, ठीक है? तो अभी आप फुल लेंथ मॉक का छोड़ एकदम ही सोचना ही छोड़ दो, ठीक है? 3 दिन लो एक सब्जेक्ट प्रिपेयर, फिर वापस 3 दिन एक सब्जेक्ट प्रिपेयर, फिर 18 जनवरी से स्टार्ट कर देना आप फुल लेंथ मॉक लिखना, ठीक है? और एनालिसिस में टाइम लग रहा है तो लगने दो, एनालिसिस में टाइम लगे बढ़िया है, ठीक है? मॉक का एनालिसिस करना जरूरी है, जितना टाइम लगे उतना लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? Yeah, Mission Gate 202. You want signals PIQ series in English, but like it's not like I have spoken any like weird English word there. Like it's normal, right? Whatever we are talking here, it's on English. So तो भाई हाँ हाँ नहीं शो ऐड ऐड कोई it's बोलना like you have to ultimately you have to solve the questions, right? That your purpose is to see the solution and solve the questions in the exam hall. So it should not be the matter of language, right? We have only like 1 month left, so this is not the अभी ये right सब thing to मत do. सोचना यार, फिर मास्टर्स भी हाँ तो करना है। और इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं होती ना, हिंदी होती है वो। इंग्लिश तो लोग बोलते हैं कि ताकि और व्यू ज्यादा हमारे, वो हिंदी होती है। अब आपको क्या लग रहा है मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ? कोई जिसको हिंदी नहीं आती वो ये लैंग्वेज समझ पाएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ? नहीं समझ पाएगा ना। तो उसको तो इंग्लिश ही चाहिए ना, या तो हिंदी होता है या इंग्लिश होता है। ये इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश कुछ नहीं होता, ठीक है? फालतू का ये है कि ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट भी आ जाए इंग्लिश वाले भी आ जाए, तो इंग्लिश बना दिया हमने। तो या तो हिंदी या इंग्लिश, तो ये वाला चैनल कंटेंट तो इंग्लिश में ही आएगा इसमें, ठीक है?
और इतना टफ नहीं है यार इंग्लिश समझना, क्योंकि अगर हिंदी वाले आते नहीं तो हमारा 70% क्राउड तो नॉर्थ इंडिया से है, जबकि हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो आप रेदर देन फोकसिंग ऑन लैंग्वेज, अगर आप कंटेंट पे फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। और अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो बहुत सारे पीवाईक्यू सीरीज है एंड हाँ, लोग ये वो हिंदी में दूसरे, सिग्नल्स की, वहां से हाँ, वहां से देखो, दूसरे लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, वहां से देख सकते हो आप आराम से। पीवाईक्यू सीरीज बहुत सारी मिल जाएगी आपको हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। लिटिल कॉम ये वाला हो गया ना पवन का, आई एम लेफ्ट विद कॉम एंड ईटीसी एमएफटी, आई विल स्टार्ट कॉम नाउ। हाँ ये हो गया था, ये बता दिया था। मीम हब अभी ये तक वही हो गया चिंतन ना। मौके भी हो गया था, सीडी कौन ब्रदर, वो मीम वाला भी हो गया था। ब्रदर विच टॉपिक्स, यार पहली बात तो हम ब्रदर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है फिर भी ब्रदर विच टॉपिक्स बता वी दिया हैव टू उसने, और कंसिडर। इलेक्ट्रॉनिक्स ना, हाँ और वो इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिया, हो गया हो गया हो गया। यार बहुत सारा आ गया सर, ईडीसी कंटिन्यू। बीआरसी का फॉर्म लगे मीम, अब अगर ठीक है यार, अगर कॉन्फिडेंस है तो भर दो यार, फॉर्म भरने में क्या जाता है। लेकिन मुश्किल है यार, अगर ईडीसी कम्युनिकेशन ईएमएफटी नहीं किया है तो बीआरसी निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर रिटर्न निकल भी गया तो इंटरव्यू में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं, यू आर आस्किंग टू ब्रिंग सम असाइनमेंट सीरीज, राइट? इट्स ऑलरेडी देयर. If you just go into the RPWQ series folder, all the assignment questions, everything is there. So you just need to go into that. It's already there. असाइनमेंट सीरीज देखो, एक तो क्या होता कि मैं लाइव सेशन लिया हूँ 7-8 घंटे का, वहां पे मैं करता रहा हूँ कि देखो मैं ये लेके आ रहा हूँ, मैं वो लेके आ रहा हूँ, वो कर सकता हूँ मैं, ठीक है, साल के एंड में आके। या फिर मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ शांति से, और जिसको पढ़ना होगा वो देख लेगा, ठीक है। तो शांति से कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ दिखता नहीं है, पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को, और अगर हवा बना के करा जाए तो वो दिख जाता है, ठीक है। अब देखो, अभी गेट एग्जाम जैसे एंड होगा, उसके बाद मैं मार्च से लेके अक्टूबर तक शांत रहूंगा आराम से, बढ़िया, ठीक है। कुछ नहीं, स्टूडेंट वगैरह क्या है कुछ नहीं पता मेरे को, मार्च से अक्टूबर तक शांत रहूंगा। नवंबर में मैं सडनली एकदम पूरा एक्टिव हो जाऊंगा कि अब तो मैं स्टूडेंट्स के लिए जान ही दे दूंगा सारा। मैं स्टूडेंट्स के लिए सोचता हूँ, मैंने जिंदगी भर जो लगाया है स्टूडेंट्स के लिए लगाया है, स्टूडेंट्स ही मेरे भगवान है बस। तो वो नवंबर में क्यों होता है, पूरे साल भर क्यों नहीं होता, अप्रैल से क्यों नहीं स्टार्ट होता, वो मार्च से क्यों नहीं स्टार्ट होता, नवंबर में क्यों होता है, ठीक है। जितना कंटेंट नवंबर दिसंबर जनवरी में प्रोवाइड किया जाता है ना दूसरों के द्वारा, वो उतना हम उतने मंथ में भी देते हैं, बट वो थोड़ा शांति से देते हैं हम लोग, ठीक है। हवा बना के नहीं देते, तो वही डिफरेंस है। जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ना उतना ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप वो थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा सर्च करो चैनल को, मतलब थोड़ी सी मेहनत करो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है बस। Balaji, yes, it's very important. It's very रिक्वायर्ड, important. You cannot रिक्वायर्ड, skip it. You cannot वेरी skip it. Okay. इंपॉर्टेंट। And so you are saying that you have not studied aptitude, how to complete. So in RPWQ playlist, you can see that there are 3 videos. Okay. So you can watch those 3 videos for aptitude. I think that should be enough. Okay. So in the playlist RPWQ, you can go and see that. Yes, EDC playlist is complete on YouTube. You can just watch the first video on the playlist. All the information will be mentioned there. It is complete on YouTube. रवीन फुल एंड टेस्ट होंगे स्टार्ट फ्रॉम 18th January onwards, okay, 18th January onwards. I will give you complete plan as well, okay, don't worry. RPYQ digital, there is a video in the playlist. So of collection of 80 questions, I think that should be more than enough for digital electronics. So you can revise that Yeah, with revise. see the playlist, there is one video. उसका टाइटल चेंज कर देते हैं, उसको RPYQ कर देंगे तो फिर हाँ, शायद कर देंगे, थंबनेल भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फिर थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा उसको। फुल एंड टेस्ट फ्रॉम 18 जनवरी, ओके, 18 जनवरी। देखो इन सिग्नल व्हिच इज इंपॉर्टेंट और द which is डिजिटल important, पार्ट, continue start the digital part, continue start the digital part मतलब ही इज टेकिंग ईदर कंटीन्यूअस पार्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट और द डिजिटल, लाइक और की जगह आर लिख दिया होगा शायद गलती से, और okay, लिखना okay. चाहता था। So Madhu, looking at the previous year trends, continuous part is much more important than that discrete part. But gut feeling says that this year from discrete part 2 questions are coming. This is the gut feeling. In EC, I'm telling, okay, from the DTFT, DFT, and DTFS, 2 questions I'm expecting this year from the discrete part itself. But if you look at the previous year trends, then continuous part and continuous part only. People like they are asking a lot of questions from continuous part, but not much from discrete part. But if you see like today's question paper of EC, then they are moving towards that particular part where we focus more on the more on those concepts which are actually used in industry. So in the industry, you don't deal with continuous time signal. You deal with discrete time signals. But before studying continuous time signal, you will never be able to understand discrete time signals. So like till this point, they have asked a lot of questions on continuous time signals. So now I think that they would be focusing more on discrete time signal and less on continuous time signals.
So this is just my gut feelings, but if you need to prepare, if someone is on the edge that, sir, what I need to prepare, continuous or discrete, then go for continuous. But again, if you are someone who is preparing for under 100 rank, then don't ignore that discrete part as well. Okay, discrete part is also very, very, very important. इसका ये वाला हो गया क्या, ये वाला? हाँ, ये वाला मैं देख रहा था अभी. Sir, I skipped communication. Currently prepare digital from you. Reached latches. Completed revising analog and signal scientific and confident. Can you provide a plan for coming days? No, like you don't go for any guidance package or anything like that. It is not even available. Okay, first thing is that guidance package is not even available. So here you are getting the guidance, no? So digital you are currently in latches. Completed revising skipped communication. Like you did not tell what all subjects you have covered. No, you should tell complete. No, like you are you done with network analysis? Are you done with the other subjects? Signals is there, control is there. I think he is So I don't done know with how- signals analog. He's just saying he's 70% confident. That means like has not revised properly signals or something. That's Okay. what I think. So basically, if you are skilled communication, then skip it completely. Complete digital electronics and then just revise your previous subjects and start with your full and test from 18th or 15th January onwards. Okay. So yeah, that's it. This is what you can do. If you have skipped communication, skip it completely. हाँ, so देखो अगर आपका पहला सब्जेक्ट है ना, नेटवर्क थ्योरी में टाइम लग रहा है तो वो लगेगा, ठीक है ना. पहला सब्जेक्ट है तो लगेगा. पहला सब्जेक्ट है ना, तो उसमें हाँ. समय लगता है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है. होपफुली आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी नेटवर्क थ्योरी में हो तो दिक्कत है थोड़ी सी. लेकिन पहला सब्जेक्ट होता है नेटवर्क थ्योरी, उसमें टाइम लगता है, ठीक है. कोई डरने वाली बात नहीं है, करते जाओ धीरे धीरे, उसके बाद आपकी पेस अपने आप बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है. Yeah, Kumar, yeah, maths will be started from basics only. Don't worry. From 2000, sorry, yeah, March 2026. Okay, maths will be started from I think March 2026. Approved का बता दिया. And it will start from basics only. Yeah. देखो, if you देखो, देख तो नाम तुम्हारा ऐसा है. मेरे को रिसोर्स नहीं पता, लेकिन in the control RPOQ series, the last video, part 4, right? I have taken a lot of instrumentation question. Like most of the controllers question I have taken from instrumentation only, so you can watch that. It's not like you will have to study something separately for controllers and compensator. Whatever knowledge you know, you need to apply that. So you can watch that RPOQ part 4 control system. There I have taken a lot of questions, so that will be a good revision for you. यार देखो, मैथ्स एनालॉग में डायरेक्ट आरपीआई से करोगे तो यार सवाल लगने थोड़े मुश्किल है. वो डिपेंड करता है कि एनालॉग में तो नहीं लगेंगे. देखो एनालॉग में नहीं लगेगा, analog ठीक है. मैथ्स में फिर भी, मैथ्स में you still be able to do it, but एनालॉग में it will not be, because I have not told you the concepts. I have directly solved the questions. Okay, so नहीं होगा. मतलब मेनली आरपीआई उनके लिए है जो पहले से पढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना. और मैथ्स में शायद फिर भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में सर ने बेसिक से कराया. वो भी डिपेंड करेगा आपका कितना पहले वाला मैथ्स कितना आप पिकअप कर रहे हो. मेरा बात है कितना, व्हाटएवर यू कैन पिक अप, राइट. सो या, लेकिन एनालॉग में तो सीधे सवाल करवाए हैं यार, ठीक है. तो इतना मतलब आप जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना. आप मतलब 7-8 घंटे में ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे ना कि आप कर पाओगे सारी चीजें. मतलब एनालॉग इज ए 130 आवर कंटेंट, ठीक है. तो इट्स नॉट लाइक, समझाने में भी बहुत सारी चीजें हैं ना, तो नॉट दैट सिंपल. स्टूडेंट 005 30 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आ रहे हैं. इट इज गुड, वेरी गुड. इट इज ओके. 30 marks in subject wise test is actually very good. Okay. EDC important for digital VLSI roles? No. Techipedia? यार वो No. अभी जिसने ये डाउट पूछा मेरे को दिख नहीं रहा है. EDC फॉर डिजिटल VLSI रोल क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें से, कल ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी, कल या परसों हिमांशु के बाद वाले चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है ना. कि EDC से क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है. सीमोस वाला पार्ट करना है तो सीमोस वाले पार्ट तो के वैसे लिए वो तो एनालॉग में आ जाता है ना. वो EDC में आता है क्या? एनालॉग में आ गया. बट उसमें वो डिवाइस फिजिक्स पूछते हैं, शॉर्ट चैनल इफेक्ट वगैरह पूछ लेते हैं. अच्छा, वो इस बार मैंने EDC में सब करवा दिया है. तो यही वन ऑफ द रीजन था कि मेरे को ये सब चीजें यूट्यूब पे डालनी भी थी, ताकि ये डिजिटल VLSI वाले भी पढ़ लें. तो वो पूरा वीडियो मैं कल, प्लेसमेंट्स के लिए EDC का कितना पार्ट कैसे पढ़ना है, वो पूरा वीडियो मैं कल बना दूंगा एकदम बढ़िया से, ठीक है. कहाँ से क्या क्या करना है, तो उतना उसकी टेंशन मत लो. EMFT में सर मैंने EMFT में स्पेशल टॉपिक लाइक ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है क्या, एंटीना. देखो इंपॉर्टेंट तो तब हो जाएगा अगर वो सवाल आ जाएगा उसका, ठीक है. ऑप्टिकल फाइबर का मतलब अगर मैं अगर पेपर सेटर होऊंगा, जो कि मैं कभी बनूंगा नहीं, लेकिन होऊंगा तो मैं सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर का सवाल पूछूंगा, ठीक है. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वेव फिनोमेना से लेके, मैं उससे सवाल पूछूंगा. अब उसमें जिस दिन सवाल आएगा उस दिन वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा. अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनमें से सवाल इतने आ नहीं रहे हैं, ठीक है. तो अभी के लिए मैं ये बोलूंगा लेस इंपॉर्टेंट है, बट लगता है फ्यूचर में सवाल उसके आ जाएंगे तो वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा. ऑप्टिकल फाइबर तो कर ही लो यार आप, ठीक है ना. ऑप्टिकल फाइबर कर लो,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ाया जाता है, जो अपन ने 11th-12th क्लास में पढ़ा था, वो वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लो, बट एक्चुअल डेप्थ जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की होती है वो अलग होती है थोड़ी सी, ठीक है, जो कि अपन ने मिसलेनियस टॉपिक्स में किया है। तो मिसलेनियस टॉपिक्स वाले वो 4 वीडियो है ना, उसके अंदर आप देखोगे कि मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को वापस बढ़ाया है। तो वो वाला पार्ट आप स्किप करना चाहो तो कर लो, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर कर लो, ठीक है। अब एंटीना वगैरह का इतना टाइम नहीं है यार, मतलब एंटीना के सवाल लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2023 में पूछा गया था, 24 में भी नहीं आया, 25 में भी नहीं आया। अब 26 में आ जाए तो आ जाए, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि आप एंटीना भी करोगे। तो एंटीना आप छोड़ चुके हो तो छोड़ दो, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर कर लेना। छोटा टॉपिक है, आराम से 2 घंटे की सीटिंग में हो भी जाएगा, और अगर सवाल आया तो उसका बन भी जाएगा। तो एंटीना कर लेना, ठीक है ना। Yeah. Ashrita, complete network theory is present on YouTube. Like complete part, not even DC. DC, AC, complete network theory is present on YouTube. So you can watch the playlist. Like you can just watch the first video. It should be mentioned there. नहीं, कोई फ्री ट्रायल अवेलेबल नहीं है गौतम अभी के लिए। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट फ्री ट्रायल. In maths, I have remaining revision of PNC and linear algebra. I have done it once. I have done in once, and it's taking a lot of time to. Anish, you can take this query. Clip machines. As look, PNC, there is a video. You can maybe you can watch that in 2x or something if you want to revise. Mostly, it will help you in solving. Like you can revise with solving questions. You don't need to revise the whole notes. You can revise the notes in a quick manner. Okay, not like see every each things, right? Just revise in a quick manner. So whichever are the important formulas, and then you can like what is the best possible way. I think first you can solve the important questions, not all the questions, but important questions which you feel you were not able to solve previously. So that's the best way and the quickest way with which you can revise linear like mathematics basically. Tips for instrumentation student, देखो यार यही होगा कि आप लोगों की थोड़ी सी लाइफ तो मुश्किल है, ठीक है। दूसरी पहली बात क्यों, क्योंकि नो वन फोकस मच ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज क्राउड इज लेस। देखो सीधी सी बात है, कोई बोलेगी कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसा है वैसा है, क्राउड कम है इसलिए लोग फोकस नहीं करते। रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर, I would always say that instrumentation question paper is always set on a good level. Okay, never it is very easy. It is always set on a good level. You see last year's question paper. Instrumentation signal paper was like brilliant. I have never seen the level of questions that was asked in signal system last year in instrumentation question paper. And you would see like rank 1 was getting 63 marks. 63 marks, rank 1 instrumentation. So that kind of question paper was there last year. So I would say that in instrumentation you can never ever think that what kind of question paper would be set up. So but rank you can target rank would be under 100. If you want to do well, if you want to get into masters, then you have to get under 100 rank. If you want to get into PSUs, then for instrumentation it is very easy, because there will be lesser students and PSUs would be preferring the own branch. That's why in instrumentation, if someone is getting rank around 1000, then he can also get to PSU very easily, but he has to have a degree in instrumentation engineering. Okay, you need to have a degree, either control and instrumentation would also work, or purely instrumentation would also work, or electronics and instrumentation would also work. So you need to have a degree in instrumentation if you want to go for PSUs. If you want to get into masters, then under 100 rank is required. Okay, so that's the thing that I can tell for instrumentation students. Sir, Divyansh, you're in 4th semester, so I think tomorrow or day after tomorrow, GATE 2027 roadmap will come. You can watch that video, Divyansh. बेल के बीएल के प्लेसमेंट्स के लिए देखो, इनफाइनाइट जेड आप क्या कर सकते हो कि ओके यू आर आस्किंग इन इंग्लिश, सो या हाँ ठीक है, आपको हिंदी समझ में आती है तो आप लाइव सेशन में जाओ, इसी चैनल के लाइव सेशन में। तो कुछ दिन पहले ही या फिर 1 महीने पहले हम लोगों ने एक बीएल का सेशन लिया था, जिसमें पूरी बीएल के बारे में बातचीत की थी, ठीक है। तो वहां पे आपको इंटरव्यू सवाल भी मिल जाएंगे कि किस टॉपिक से वो फोकस करते हैं। तो बीएल के सेक्शन, वो लाइव सेक्शन में जाके बीएल का एक सेशन होगा, वो देख लो आप, ठीक है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा। EDC communication left, EDC com left, com doing currently will complete by 10th Jan, but revision of EMFT signal system division digital is done. Rest all forgotten. What to do now? What should now should I do EDC? No, you should focus more on revision. Forget about EDC. You want to complete communication, complete it by 10th Jan, but focus more on revision and not on EDC. Okay, because only 3 subjects have been revised. Now rest of the revision also you need to do. So focus more on revision and not on EDC. Okay. Jadu, up to which video you need to watch for EMFT electrical? So EMFT electrical is having a separate playlist. Okay, separate playlist is there, so you need to watch that particular playlist.
How many times PYQ needs to be solved? Only once. यार आप मुर्गा छाप पटाखा यार, आप पहली बात तो अपना नाम चेंज करो, और दूसरी बात आप इतनी क्वेरी मत रिपीट करो ना यार, क्वेरी रिपीट मत करो, ठीक है? भाई मिल के अरे यहाँ पे हर एक क्वेरी रिप्लाई हो रही है ना, जो ढंग से क्वेरी है। कोई ये पूछ रहा है कि मैं गेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं, तो उसका रिप्लाई नहीं दे रहा मैं बस, ठीक है? बाकी सारी क्वेरी का मैं 1 बाय 1 रिप्लाई दे रहा हूँ ना, तो आप रिपीट मत करो क्वेरी, ठीक है? Yeah, Vignesh Pathfinder batch will extend on March. And someone is asking after clearing gate how to join PrepFusion for gate CS as a educator. ठीक है, आप रैंक 1 ले आओगे तो हम पक्का ले लेंगे, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ यार, हम लोग गेट सीएस का कुछ भी नहीं जानते ना, तो हम लोग कैसे फिर गेट सीएस के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं? वो लीड करना चाहता है बेसिकली, PrepFusion के नाम से वो मतलब CS का वही संभालेगा बेसिकली, ऐसा बोलना चाहता है। देखो जैसे मैं जब स्टूडेंट था, मैं ये बोलता था कि सर मेरी रैंक आ जाएगी ईसी में, तो उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता हूँ, तो एजुकेटर क्या सोचते होंगे कि ये बंदा क्या पढ़ाएगा, ठीक है? आज वही एजुकेटर्स नोट्स कॉपी कर रहे हैं, तो मैं भी अभी ये सोच रहा हूँ कि आप क्या पढ़ा लोगे, ठीक है? अरे तो आप मेक श्योर ये करो कि 5 साल बाद मैं रिग्रेट करूँ कि भाई आपको काश इस बंदे को देख लिया होता, ठीक है? तो कभी भी आपको जो भी ये वीडियो देख रहा है, किसी को भी पढ़ाई मतलब एजुकेशन पढ़ाना है किसी को भी, तो कभी किसी के साथ काम मत स्टार्ट करना कि सर मेरे को आपके अंडर ले लो, ठीक है? इन दिस ऑर्गेनाइजेशन नाइदर आई एम अंडर अनीश सर नोर अनीश सर इज अंडर मी, वी बोथ आर इंडिपेंडेंट। कभी कुछ हुआ कि हम दोनों के बीच लड़ाई हुई, हम दोनों ने छोड़ने का सोचा एक दूसरे को, तो अनीश सर कैन स्टार्ट ऑन हिज ओन, आई कैन आल्सो स्टार्ट ऑन माय ओन। तो हमेशा ऐसा रखना कि लोग मेरे को अप्रोच करें, ना कि मैं आपको अप्रोच करूं, ठीक है? भाई लेकिन तो मैं तो ये तेरे हमेशा, अंडर ही हूँ। कैसे तेरे अंडर ही हूँ? नहीं नहीं, कोई किसी के अंडर ऐसा नहीं है नहीं भाई। Like we both can guide ourselves and we know what is our job in PrepFusion. So it's that you need to build something on your own, okay? Never ever approach anyone, just make sure that people approach you, because if you approach someone in this field, then there is a issue कि अभी बाद में बात करेंगे ये सारे, ठीक है ना? एकदम नहीं। मॉक देने के पिछले दिन क्या रिवाइज करो, क्लिप मशीन जस्ट रिवाइज, और क्या पूरा सब्जेक्ट जो भी वीक टॉपिक्स है, जो भी फील हो रहा है, जैसे सिग्नल्स फील होता है कि फॉर्मूला भूल जा रहा हूँ, तो रिवाइज करो वो वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Any resource for practice other than PYQs, analog electronics test series, okay? Revise test series, sorry, solve questions of test series. यार इसका ये वाला जवाब देते। सर कैन आई गेट 35 मार्क्स फॉर स्टाइल प्रिपेयरिंग थ्रू योर ईसी कोर कैप्सूल? 35 मार्क्स तो ईसी कोर कैप्सूल से पूरा ही नहीं आएगा ना यार। 35 मार्क्स पर उसमें तो हम 25 मार्क्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, और ईसी कोर कैप्सूल में केवल कोर सब्जेक्ट्स है, इन दैट ओनली कोर सब्जेक्ट्स वी आर डीलिंग, ओके? इट्स नॉट फॉर द बिगिनर्स, दोज हु आर skipping 4 subjects, EMFT, communication, EDC and analog, for them it is there, okay? Not for the beginners. Yeah. सिस्टम वेगलॉग यार, I think there is a very famous book, Wikipedia, I forgot the name. You can use books, but sadly I don't have any links right now. You can, yeah, I don't have any links right now. Harshit, you are done with the network digital control analog EDC signal. You should revise it. Don't go for EMFT. Okay, revise it. Don't go for EMFT. सिस्को का हार्डवेयर प्लेसमेंट ड्राइव में क्या एनालॉग के रोल के लिए क्या वो एनालॉग नहीं यार, पता नहीं यार, सिस्को का नहीं पता, सॉरी, नहीं पता. My digital control remaining only and I am feeling burned out after doing digital control remaining after doing all the selects. I'll leave them now. I have revised them already and have notes too. तो यार मतलब कौन से सब्जेक्ट, दो डिजिटल और कंट्रोल छोड़ना तो रिकमेंडेड नहीं है यार, देखो, क्योंकि वो आसान सब्जेक्ट होते हैं, तो they are easy subjects. You are not recommended to drop digital and control. But if you feel like that, sir, I am burned out, I don't feel like doing it, then you can drop it. You are still having 8 subjects, so do well in your 8 subjects. If you feel like that I need to drop it, then you can drop it, okay? But it is not recommended to drop digital and control because they are easy subjects. Yeah, so that's the thing. Currently in 4th semester. Yeah, electrified, you are in third year and you feel like you are not confident in all of the subjects, so I will recommend that don't focus on this year's attempt. Study all the subjects in a good manner, okay, in a proper manner. So you can study electrical machines from here, you can study the network theory from here on our YouTube channel, completely it is present. Study those 2 subjects in a good manner, then attempt your 20 2027 in a good manner, okay? So you can skip this year. I do understand it will be painful for you, but skip this year, okay? That is the guidance I want to give to most of the students who are in third year and they want to
give good attempt, but they have not prepared the subjects properly. यार गंगेश्वर यार थोड़ा सा ईएमएफटी टेस्ट सीरीज में यार, या तो मतलब मैं एकदम एंड में बना पाऊंगा. Like first my target would be in communication now, then I would focus on EDC and then EMFT, and along with that in between we need to make full length test as well. So EMFT test series में थोड़ा time लगेगा यार. Sorry, like I am sorry to everyone who is watching this particular video that EMFT test series would take time, but I hope you guys have known that we have given 2 subjects as compensation, right? Those guys who purchased our test series, we have given 2 subjects as compensation because we were late in bringing the test series, right? So Test X and Test Z, these are the promo code which you can apply, and you can get 2 subject wise courses for free only for those people who are enrolled in test series. Okay, so since we are taking too much time in bringing the test series, that's why as a compensation we have given these 2 subjects. Okay, any 2 subjects you want to purchase. So Test X and Test Z, this is the promo code that you can apply. सर गेट के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें ताकि गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं, जो मॉसफेट एंटेना डीएफटी है टफ फॉर्म में आते हैं. देखो उसमें पीवाईक्यू में इतने सवाल मिलेंगे नहीं, तो आप एक काम करो ना, ये एंटीना वगैरह के लिए मेरे लेक्चर देख लो, और डीटीएफटी डीएफटी इन सब के लिए भी लेक्चर देख लो. जो टफ वाले सवाल है वो सारे करवा रखे हैं लेक्चर में मैंने, जो आने वाले हैं फ्यूचर में. बाकी तो पीवाईक्यू में बहुत कम सवाल मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में भी आपको सवाल नहीं मिलेंगे. फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में मैं ट्राई करूंगा कि मैं डिस्क्रीट के बहुत सारे सवाल डालूं इस बार. ठीक है, तो जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो हम लोग करवाएंगे उसमें डिस्क्रीट के बहुत सारे सवाल डाल दूंगा मैं. मॉसफेट वगैरह के तो ऑलरेडी मैंने टेस्ट सीरीज में बहुत सारे सवाल डाल दिए हैं. मॉसफेट के लाइक एटलीस्ट 30-40 सवाल हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में डाल दिए हैं. एंटीना का सवाल जहां तक बनता है तो इतना टफ भी नहीं बनता, लेकिन फिर ठीक है कि एंटीना के भी यार टेस्ट सीरीज में मैं डालने की ट्राई करूंगा, लेकिन इतने टफ उसमें बनते नहीं है. तो एंटीना का एक बार इतना सोचो मत. डीएफटी वगैरह के सवाल चाहिए तो यूट्यूब में पूरी वीडियो है. मॉसफेट के टेस्ट सीरीज में बहुत सारे सवाल डाल दिए. ठीक है, TCS Ninja roll or drop for gate, which is worth it. If you can afford it financially, then no doubt go for gate, because TCS Ninja you will be getting 3.36 lakhs, right? 3.6 lakh or 3.36. So that is not worth it. Okay, after doing BTech, going for TCS Ninja is not worth it. If you feel like that I can study for gate, then go for drop. Okay, go for gate drop. So everything related to get, it is not. Whatever is the name, it is not available in everything. Is all the content is not available on YouTube. Okay. No, everything is not available. Yeah, Meher, Rana, everything is not on YouTube. 5 subjects will be there on YouTube, but all the subjects will not be available on YouTube. एफटी बहुत टफ लगता है. एफटी इतना टफ नहीं लगता यार, एफटी नहीं लगता इतना टफ. पीवाईक्यू कर लो आप. ठीक है, पीवाईक्यू वही तो PYQ वीडियो है, और पीवाईक्यू का 2-3 वीडियो है, देख लो बस, इतना ना नहीं टफ. एप्टीट्यूड का मतलब जितने भी पीवाईक्यू के बहुत सारे वीडियो हैं, जैसे 25 का, 24 का, 23 का, 2018 से लेकर 25 के सारे पीवाईक्यूज कराए हुए हैं, तो वो सारी वीडियोस देख लो आप. ठीक है, bottles. टेस्ट एक्स एंड टेस्ट वाई, टेस्ट एक्स एंड टेस्ट वाई. am I on track? Like bro, like you are saying a lot of path also there. You are saying that you haven't done EMFT communication and log. Okay, for you to revise, okay, you have studied it, but you need to revise it. Okay, this is what you are saying. Okay, halfway you are in analog, and full length you are going to do from 7th onwards. So you let me know your score by 7th onwards. Like when you attempt the full and test, what is the score you are getting? After that, I will be able to tell are you on right path or not, because I don't know on what level you have studied the subjects, right? So once you attempt the test, you let me know your score. Then we can talk whether you are on the right track or not. Yeah, Nitesh. Yeah, thank you. Probability. Look, Piyush, probability is one of the important topics for GATE CS, which I know of. So do it from some, like do it. Don't skip it. Okay. Like for maths as well, probability is very important. Mathematics in CS, GATE CS branch. कौन से topic? Comedy with NI. Like we have uploaded a video. Most important topics for GATE EC. Was that there were mentioned for which subject, what topics are important? कुछ ही दिन पहले किया है, like कुछ दिन नहीं, it's been roughly around 1 month since we have uploaded, so there you can check. Okay, problem discussed in class notes are more than enough for analog circuits, much more than enough. Okay, don't worry about डिजिटल कम्युनिकेशन टफ लगता है तो एक बार जो YouTube पे करवाया ना मैंने वो देख लो. ठीक है, पूरा तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लो. ठीक है ना. So can you crack the exam? Please tell me, sir. Sir, like can you crack the exam?
Anyway, I think he's telling, No, and no, he can cracked be. it. You can be. We can Full understand. length test, I got 20. Bro, you need to improve, Nidesh. Okay? I will be just honest. You need to improve a lot. Full length test, if you are getting 20 marks, then you need to improve a lot. Okay? So focus more on PYQs. Don't write down the full length test as of now. Focus more on PYQ. Focus more on your concept building. Focus more on your revision. And in the end, in the end of January, you can write down the full length test. As of now, don't go for full length test because 20 marks is not good enough. Okay, you can surely crack the examination, but again, like as of now, it is looking difficult. But what do you mean by cracking? You will be able to clear the cutoff, but getting a good rank is looking as of now difficult. Okay. Due analog electronic strategy for instrumentation, I think they focus very good in op-amps, right? So you'll have to be very good in op-amps, all the op-amps. OPAM, MOSFET, like for analog, for EC and instrumentation, it is same. I would say any day both are same because in both of the question paper they ask very good questions. So strategy is study it thoroughly. That is the only strategy. Don't focus on crash courses and all for analog electronics for instrumentation. Surely electrical student can follow the crash course for analog electronics for electrical students, but instrumentation guys needs to study in the same depth as EC student study. Okay. पीयूष देखो, probability हिमांशु सर ने पढ़ाया, मेरा एक I have a one shot video which covers the basis of probability, not the like Gaussian distribution, not the probability distribution part, right? The part one, basis of probability. But for you guys, I think that part is important. That is not in YouTube, so you can cover it from somewhere else. Sir, after revision of two subjects, I forget many previously revised subjects. What to do now? Yes, look, if you are preparing for 26, GATE 126, then like you keep on revising the subjects. No, there is no like you cannot give any chance for forgetting the subjects. As of now, if you are preparing for 26, but to 27, if you are preparing, then if you are forgetting it, still like it is fine. Like if you are preparing for 27, okay. If you are forgetting it, then you will get more time for revision. Don't worry about that. So actually revision should be done on regular period. Like in 15 days, you should be revising one particular subject that you have already studied. But it is a very tough task. People focus more on the subject completion task rather than the revision. Even when we were the student, we also used to do the same thing. So it is actually a very tough task. But if you want to be very good with the revision, then revise in regular 15 days. But it is again a very tough task to do. 2000 GU 2010 to 2020 2015 PYK is not enough. Okay, till 2025 you have to do. So, signal system and communication by 15th January, both of the tests would be uploaded. Okay, remaining test of signal system and communication by 15th January, both of the tests would be uploaded. 15th January. So, assume a student did not get any tier 1 college. Should he go for? Could she go for VIT Valor? VIT Valor. Look, VIT Valor is having 190 students in VLSI, as far as I know. Okay, 190 students in VLSI. That means you will be competing in the college itself. So I never recommend going for VIT Valor, but if you are not getting a tier 1 college, if you are not getting NIT till which NIT I would say, till NIT Durgapur. If you are not getting till NIT Durgapur, then you can think of going for VIT Valor. Okay, not before that. Lakshman, yeah, it depends on your current situation. If you're taking just like this is your first drop, then it is fine. I don't know, one more year drop, what do you mean? Second drop, third drop, it depends on your current situation. Okay, but nowadays 2 drops are also normal, like it's not a problem. Nikhil, like if you feel like dropping digital communication completely as of now, you can drop it. Otherwise, from core capsule, you can do it. Okay, because antenna, if you have dropped, forget about it. But digital com, if you feel like that's as of now I'm going on the right path, I don't want to study anything new, then drop it. Otherwise, if you feel like that, sir, I can study something, so I would say you can cover it from core capsule. Okay. Yeah, Nitesh. Yeah, thank you for that. Signal system, you liked it. Yeah, thank you. Debraj, don't need to prepare anything separately for iron. Whatever you know for EC, right? Prepare it well, revise it well. That's all. Whatever knowledge you have for EC, you will apply that in your iron examination. So I completed the select network control, signal maths, and digital and analog half completed, and aptitude needs to be studied. I completed the division of control, signal half completed.
Yeah, your query is not complete, no? Sardhar Singh, your query is not completed. So yeah, let me see. Yeah, sir, I'm getting average 30 marks out of 50. It is a very good marks. Dilip, it is a very good marks. You are getting 30 marks out of 50. It is actually a very good marks you are getting, and 50 plus you should be able to get in full length. Okay, just try attempting one full length test. You will be able to get 50 plus. So don't worry about it. 30 marks out of 50 in subject wise test. Actually, it is very, very good. Don't worry at all. If you start now getting 35 marks, I don't know how you can get. Sorry for that. I actually don't know. Okay, starting now getting 35 marks, I don't think this is the channel for you. And Okay. NPC learner, like we cannot say like this much is enough or that much is enough. Whatever you're doing is good. Your syllabus is done. You're practicing. Yeah, that's good. Just yeah, but PYQ test is बाकी है, राइट? सो वो प्रॉब्लम है, राइट? उसको PYQ तो अगर सिलेबस ओवर है तो PYQ भी ओवर होना चाहिए. सिलेबस तभी ओवर होता है जब आपका PYQ ओवर हो जाता है. तो बचा है अभी भी सिलेबस और टेस्ट सीरीज में भी फोकस देना है. तो वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा रैंक लेके आने के लिए. Taking one more year drop is good, or should go for NITK? NITKS means which NIT you are talking about? NIT Surathkal, if you are talking about NIT Surathkal is very good. You can go for it. Gaming, see, yeah, test series would be same. Okay, test series will not change for that subject. If you're buying the subject, your test series will be same. It will not change. Yeah, Rajkumar, happy new year. मेरा सिलेबस कवर है, प्रैक्टिस डिसेंट है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज बाकी है. तो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज करो यार, फिर आ सकती है रैंक बोल दिया बढ़िया. ठीक है, बोल दिया वो तो हो गया. आई एम प्लानिंग. बता दिया. हाँ, ये भी सेम रहेगी यार टेस्ट सीरीज. Manish Pandey, it would depend like how much pressure would be there in your company. We don't know, no, like how much pressure would be there. As far as I've heard, Infosys and TCS will not be putting much pressure on you. नहीं, बेंच पे रखते हैं तो ज्यादा नहीं होता. कम ही होता है प्रेशर, कम ही होता है. Wouldn't be much pressure there, so you can still join and you can think of it. I'm left with communication and aptitude, currently doing random variables. Is there any part in the communication part which I can leave? Yeah, first do random variable, random process, and then you can focus on digital communication marathon 1. There we have studied PCM scheme, and then we have studied quantizer and threshold detector. That part is actually very important. This much if you do, that would be enough. Okay. How enough? Like 70% of the question would be coming from these many parts only. So random variable, random process, digital communication marathon 1. That should be good enough. नेक्स्ट लाइव यार देखो, एक तो मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि हम इसी दिन आ जाएंगे नेक्स्ट लाइव. तो देखो, विद इन 10 days वी विल ट्राई टू कम. ओके, श्योरली विद इन 10 days वी विल ट्राई टू कम इन नेक्स्ट लाइव सेशन. यार अभी ड्रॉप वगैरह की बातें कहाँ से आ गई यार? एक मैं क्वेरी का आंसर देता हूँ ड्रॉप की, पता नहीं ड्रॉप की बातें आ जाती है. अभी तो गेट का एग्जाम है ना, गेट का एग्जाम दो. अभी ड्रॉप की बातें क्यों कर रहे हो? अभी ड्रॉप वगैरह मत सोचो ना अभी. Sir, no chance of taking another year drop if I didn't qualify for GATE. In the worst case, backup option VIT ME. अभी आप VIT वेलोर के बारे में सोच रहे हो. तो VIT वेलोर, अब एक बार मेरे को बात बताओ आप कि क्यों नहीं आप ड्रॉप लेना चाहते? फाइनेंशियली इशू नहीं है आपका अगर आप VIT वेलोर के बारे में सोच रहे हो, है ना? फाइनेंशियली इशू नहीं है अगर आप VIT वेलोर के बारे में सोच रहे हो. तो ड्रॉप नहीं लेने का केवल एक रीजन हो सकता है, वो है फाइनेंशियल इशू. वरना आराम से ड्रॉप ले सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास पढ़ने आओ, कहीं से ही पढ़ो. अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो उसका पीछे एक ही रीजन है, वो है फाइनेंशियल इशू. लेकिन अगर आप VIT वेलोर के बारे में सोच रहे हो तो फाइनेंशियल इशू है नहीं ना. तो व्हाई वुड यू वांट टू टेक अ ड्रॉप? व्हाई वुड यू नॉट वांट टू टेक अ ड्रॉप? राइट. बट VIT वेलोर के बारे में सोच रहे हो, फिर चले जाना VIT वेलोर में. वो ठीक ही कॉलेज है, इतना खराब नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया भी नहीं है. ठीक है ना? या हर्षित, या बेस्ट ऑफ लक. Sir, in MFT, I'm transmitting web topics, but I prepared all other subjects while giving exam. I've done gate 5 for ECA. Yeah, like don't be less confident. JV drama, whatever your name is, like JV drama Charan. Don't be less confident. You have dropped transmission line and waveguide only. Rest all the subjects you have covered, so you can score very well. Okay, and you have completed the PYQs as well. So don't be less confident. You are like you are on a very good path. You will be able to do well in the examination. Have the confidence on yourself.
Revise other subject. हाँ भाई 30-40 मार्क्स में एनआईटी मिल जाएगा, पेपर कैसा आएगा उस पर डिपेंड करेगा ना यार, 30-40 अरे मार्क्स तुम में अभी मिलेगा कि नहीं। कैसे, हाउ कैन यू से कि अभी तो पेपर ही नहीं हुआ, अभी तो पेपर ही नहीं हुआ. Easy, but coursework and placement are not Like good. Manu is giving the review of VIT Velo. I Hmm. have the same review, but I cannot say it online. So you can read his review. We cannot show on the screen, but Manu Godwa has written the review. That's the same review that I have for VIT. Okay. It's okay, Vetri, if you have wasted the time, you cannot get it back. But whatever you have done, just forget it and just do plan for the future, right? So just forget about the past and plan for the future. Yeah. So guys, if you are having What are your any, plans? बताओ. What are your New Year plan? क्या है plan? बताओ बताओ. हाँ हाँ, न्यू ईयर प्लान्स तो बताओ, क्योंकि अभी देखो 34 लोग हो गए हैं सेशन में, तो अभी लोग निकल चुके होंगे, 6 बजे तो निकल जाना चाहिए. व्हाट यू गाइस आर डूइंग? देखो यार, जो भी Why? हो, मतलब कॉलेज वाले लोगों को मैं कुछ कुछ मतलब एक सीनियर्स की तरह मैं बता देता हूँ कुछ कुछ चीजें, ठीक है. तो जो भी करना है, मेमोरी बनाने के लिए कुछ भी मत कर लेना, ठीक है ना. आज ठीक है, साल का लास्ट दिन है, साल का लास्ट दिन है, जिंदगी का लास्ट दिन नहीं है, ठीक है ना. तो एक कॉलेज वालों के लिए बस, ठीक है ना, थोड़ा फोर्थ ईयर है, मेमोरी बनानी है, ये करना है, वो करना है. एक वो बस्सी की वीडियो देख ली होगी आपने कि कॉलेज के लिए मेमोरी तो होनी चाहिए. तो मेमोरी के चक्कर में आप वो सब मत कर लेना यार 31st को, कि आपका साल का लास्ट दिन हो, जिंदगी का लास्ट दिन है बने, और अच्छी जिंदगी का है, ठीक है. तो घर पे ही पहुंचना है अपन को, ठीक है ना, घर पे ही पहुंचना है, लगता है पुलिस हिमांशु स्टेशन नहीं सर ने पहुंचना. कुछ किया था. हिमांशु ने कुछ किया था. मैंने भाई कुछ बन नहीं किया गया. भाई, मैंने देखा है, कुछ नहीं किया भाई. और मैं अगर फोर्थ ईयर में कुछ करता तो तेरे तक नहीं पहुंचती क्या बात? ये था ना, ठीक है. तो अपन को पहुंचना घर पे ही है, ठीक है ना. तो थोड़ा ध्यान से रहना, और गेट का एग्जाम भी तो दे ही रहे हो आप, अगर मेरे को देख रहे हो तो गेट का एग्जाम भी देने वाले हो, तो ये सब चीजें मत करना, ठीक है ना. देखो सर कितना चिंता करते हैं आप लोगों का, कितना चिंता करते हैं आप लोगों के चिंता लिए. तो क्या भाई, मैं ये फोर्थ ईयर के बंदे भाई एकदम पागल हो जाते हैं ना, कि बस अब तो हम ही हैं. आजकल के थोड़े से आजकल के फोर्थ ईयर के बंदे थोड़े ज्यादा ही आजकल के भी चल. नहीं, अपने टाइम भी थे, ऐसे ही थे अच्छा. अपने टाइम भी, हम भी ऐसे ही थे. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है. नहीं, वी आर नॉट बोथ सेलिब्रेट इन द वगैरह सब सेम करते ही हैं. कॉलेज, बट भाई भाई है, भाई No. भाई है अपने. He is from Jadavpur, I am from Shivpur. Okay. Now don't ask me which college is Shivpur. Yeah. ठीक है, तो बाकी आराम से सेलिब्रेट करना यार सब लोग, न्यू ईयर है, ठीक है. The signal system is already there, right? We have done the question series, so signal system is already uploaded. Harry, the other subjects we will see what we can do for that. So I wanted to ask, I wanted to ask, I completed networks. यार वेत्री, आप पहले तो ये बताओ, आप लाइव सेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे अरे वो इतने दिनों ज्वाइन से? करता है, वो थोड़ा सा वो है, उसने टाइम वेस्ट कर दिया तो अब वो डर रहा है, मेरे को फील हो रहा है ऐसा. आप लाइव सेशन ज्वाइन करो, ठीक है ना, आप बढ़िया स्टूडेंट थे यार. मैं 2-3 बार से देख रहा हूँ, लाइक यू आर नॉट joining लाइव सेशन. सो लेट मी आंसर योर क्वेरी. I wanted to ask, I completed network, analog, digital and maths so far. I will complete signal and control before Jan 10th. Can I study MFT, EDC and do the revision side by side or focus on मैंने revision? स्टडी इतना कुछ तो नहीं कर पाओगे यार, इतना कुछ तो हाँ, नहीं कर पाओगे. EMFT, EDC रहने देना यार, ठीक है. आप नेक्स्ट सेशन लेकिन ज्वाइन करो, मैं इंग्लिश उसमें. इंग्लिश इंग्लिश में या ओके ओके ओके, या लीव आउट एमएफटी एंड ईडीसी. ओके, just whatever या you're planning before that, complete that, try to complete that first. एंड ऑल्सो ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन. ओके, वी विल अनीश, लाइक एक और इस बार इस वीक को ही ले लेते हैं, इस वीकेंड पे ही ले लेते हैं सेशन हाँ, एक ले और, लेते हैं. मेरे को लग रहा है, ठीक है. ठीक है. और वीकेंड को ले लेते Titans हैं. match session we will take. Another session we will take on this weekend only. On 7th Jan we will try to take. 7th January को ले लेते हैं, एक ट्राई करेंगे एक वीक पे. या कॉलेज भी टोल दो. एनलोकॉम का वन शॉट डाल दूंगा यार, ठीक है. आपने फिर नाम चेंज नहीं किया यार, मोदी जी 400 बार. ठीक है भाई, अब ये नाम मैं बार बार थोड़ी नहीं बोलूं, मोदी जी 400 बार. क्या पता मैं फ्यूचर में फेमस हो जाऊं, बहुत फेमस हो जाऊं, फिर लोग फिर कहेंगे ये तो एक क्लिप करेंगे, ये वाला पार्ट हाँ, क्लिप करेंगे.
मजाक कर रहा हूँ भाई, इतना फेमस भी नहीं होगा, लेकिन ठीक है। तो वन शॉट यार मैं क्या करूंगा, फ्री ट्रायल दे दूंगा, ठीक है ना, एनलॉक कॉम का फ्री ट्रायल दे दूंगा, जैसे ही कंप्लीट होता है फ्री ट्रायल दे दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो, आप कर लेना, 4-5 दिन में कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, वो अनलॉक कम हो जाएगा। Yeah. Deepak spent more time in mocks. Also, I think now you can start with subject-wide test series, right? You can give subject-wide test series of whatever subjects you have completed. So you can do that. Yeah, Manu, best of luck this year. Do well. Sardhar, like I did not get your query. Like, can you write down your query again? So बड़ा था, If can I you write missed down? it, पढ़ लिया, बड़ा था वो उसका बहुत, ये कंप्लीट हाँ, कर but लिया। वो complete नहीं था ना। आप can you please write down your query again? I will answer it. Okay. I have Which completed subject 80% can I syllabus by join 10 Jan. test I'm done series? with IQ as well as complete revision. Rest of the time I only spent in mocks. My plan good, or should I? Yeah, it is good. Deepak Kumar, you are thinking good. Yeah, it is good. No need to change. नहीं बता दिया, हाँ उसका तो बता दिया, हाँ उसका हो गया, उसको बस बता दिया, सब्जेक्ट वाइज सकते हैं। Subhash, whatever you just watch our teaching and any other place, any other institute teaching, whichever frequency matches with you, we can go ahead with the course, right? All the courses are detailed only, so whichever educator your frequency is matching, you can go ahead with that course. Yeah, always a hustler. हाँ बता। सदर सिंह, आप रिपीट कर दो ना क्वेरी, ऊपर आप रिपीट कर दो एक बार, ठीक है, आप रिपीट कर दो ना, वापस लिख दो। अब ऊपर तो बहुत सारी क्वेरी थी ना, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सारी क्वेरी में लुकअप करूं फिर आपकी क्वेरी वापस देखूं, एक बार रिपीट कर दो ना आप। वो आपकी क्वेरी जो मेरे को याद आ रहा है, जहां तक आपने बताया था कि सर मैंने ये सब्जेक्ट कर लिया है, बट पूरी नहीं थी सर। शुड आई रिवाइज द अदर सब्जेक्ट और नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग सब्जेक्ट सिलेबस? या आई कैन सी इट नाउ। सर आई कैन सी योर क्वेरी नाउ। या ओके आई कैन सी इट। कंप्लीटेड network control signal maths, 4 subjects you have completed, digital analog half completed, and aptitude need to study. So I would suggest that you go with the network, analog complete, digital complete, control complete, signals complete, mathematics and aptitude. So with these 7 subjects you will go in the examination. Okay, hopefully you are from EC. So if you are from EC, you can go with these 7 subjects and complete those 7 subjects, revise them, solve the PYQs and attempt some full and test and go in the examination. Okay, so that would be good enough for you. That would be the best possible recommendation from my end. You would be then you would be able to do well. Fine. Always hustler, this is difficult, right? So you will have to manage. You will have to somehow manage, like give less priority to whatever subjects are not that focused in college, wherever attendance is not that measured, right? So in those kind of scenarios, you will have to somehow manage, give less priority to those things and more priority to get. यार सेमेस्टर एग्जाम का नेटवर्क का पेपर 12 तारीख को है ना, आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। सेमेस्टर नेटवर्क एग्जाम का तो ही तो है, इतनी चिंता मत करो यार। थर्ड सेमेस्टर में होना इसलिए चिंता हो रही है आपको, फिफ्थ सेमेस्टर में होगा ना तो कहोगे कि सर 12 तारीख को पेपर है यार, क्या बात कर रहे हो आप? क्या ये बता रहे चिंता हो भाई, मत करो। 10 तारीख से तो करेंगे स्टार्ट। क्या बता रहे हो? 12 तारीख को पेपर है, 12 दिन है, 12 दिन में आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सीनियर से पेपर मांग लो प्रीवियस ईयर के, और वहां से रेफरेंस लेके सवाल कर लो, ठीक है ना। अच्छा, बैक का पेपर हो रहा है तो आपको और थोड़ा ऑर्डर है, अच्छा तो हाँ, वो वाला डर है, फिर ठीक है, ये वाला डर हाँ रहता है भाई, हाँ, ये वाला वो डर रहता तो नहीं, वो डर रहना चाहिए, वो डर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार हो गया ना है। तो तो इस बार तो अब ठीक वो है। बैक का पेपर तो वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, थोड़ी प्रोफेसर से बातचीत करने का ट्राई करो यार कि सर पेपर इजी बनाना थोड़ा सा, यही कर सकते हो। बाकी पढ़ना देखो, गेट के रिसोर्सेज से मत पढ़ो, हमारे रिसोर्सेज से मत पढ़ो। हाँ मत एक बोलो। रितेश दोलखिया सर है, रितेश दोलखिया सर, ठीक है, यूट्यूब पे चैनल है उनका, रितेश दोलखिया, वहां से देख सकते हो। क्लास का कोई टॉपर बंदा होगा, उसने नोट्स बनाए होंगे, उनके नोट्स ले सकते हो, क्लास के टॉपर बंदे के, और ऐसे कर सकते हो यार। डिजिटल गजब पढ़ाए हैं यार, थैंक्स भाई, थैंक्स। बट और भी सब्जेक्ट पढ़ के देखो आप, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आप यही बात बोलोगे, एक बार और भी सब्जेक्ट पढ़ के देखो। ये मेरे भाई, ये नेटवर्क, नहीं एनालॉग और नहीं डिजिटल, ये 3 ही जाते हैं बस। नहीं, हिमांशु सर चाहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के भी आए, मतलब आप समझ नहीं रहे हो, हाँ आपको दूसरे सब्जेक्ट के बताने हैं, वो ये चाहते हैं, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि और भी subject। हाँ, ऐसा नहीं, थोड़े सारे दूसरे सब्जेक्ट सब्जेक्ट के भी मतलब पढ़ोगे अपने ना। हैं, सारे सब्जेक्ट के अपने वी गिव आवर बेस्ट एफर्ट्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। या आई गेस दैट्स इट। या और भी है। वी वी आर कैन मोर मूव ऑन कॉन्फिडेंट बिकॉज़ वी टेक केयर ऑफ। कैन यू से वन डायलॉग टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट? नहीं, डायलॉग तो क्या, देखो, कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या बोला जाए। देखो, लाइक आप, if you have studied right properly a subject, then you know, like if that question comes in the exam hall, you should be able to solve it,
like if you know the concepts properly, the other guy will not be able to solve it. So yeah, that's how you can think about it. हाँ शारदर, हाँ सही है। पहले मतलब वो 7 सब्जेक्ट मैंने बताए थे ना आपको, वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना? जैसे डिजिटल आप बीच में नहीं छोड़ना कोई भी सब्जेक्ट। अगर आप मान लो आपने डिजिटल में सीक्वेंसर तक करा और आप कह रहे हो कि सर अब मैं एग्जाम में जाता हूँ, तो वो दिक्कत हो जाती है। पूरा कंप्लीट हो गया ना, 7 सब्जेक्ट बढ़िया से कंप्लीट हो जाएंगे। आप कह रहे हो जनवरी 10 तक मैं कंप्लीट कर लूंगा, तो फिर बढ़िया है सब, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू वगैरह पूरी ढंग से देख लेना, रिवाइज कर लेना पूरे नोट्स को बढ़िया से, और फुल लेंथ मॉक का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। मतलब मॉक का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि सीधा एग्जाम में मैं फुल लेंथ मॉक लिखूंगा। वो 3 घंटे सिटिंग वाली प्रैक्टिस चाहिए, तो 3 से 4 फुल लेंथ मॉक लगा लेना, और उसके बाद एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाना, तो कुछ बढ़िया कर पाओगे आराम से, ठीक है ना? उस समय कुछ ज्यादा ना, कुछ कम सोचना है ना ज्यादा सोचना है। एकदम 7 सब्जेक्ट बढ़िया, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, आप आराम से उसमें 50 मार्क्स लेके आते हो, बढ़िया सीट मिल सकती है आपको, ठीक है ना? Yeah. In gate 25, I was scoring 45 plus marks in mocks, but this time I only got 36. I don't know what happened with me uh, in the exam. I got panic and situation. Look, you have written okay. You are saying in the examination you got 36. Yeah, it happens sometimes. Like you get the panic situation and you don't score well, right? But this time you have already seen it. No, you have already seen that you haven't performed well in your examination up to your expectation. So it should not happen again. This is the temperament you need to have. That this time, sir, I have already seen it in 2025. My bad luck is gone. Now everything that would happen, that would be a good luck for me. Okay. So this time we are not going to mess it up. This time we are going to perform well. Right? Yeah. Happy New Year. Thank you. Yeah, I I think do. we Yeah, are almost thank you. done. We're almost Yeah, done. I guess, लोग भी yeah, अभी it's जैसे done. लोग भी पार्टी करने जा रहे हैं, ठीक है, डाउन हो गए अभी। तो Yeah, 26 only left. Like if there is any query, or you guys can like the session first. Let's try taking the target of 40 likes. 31 कितना likes हुआ है? are there. हाँ 40 लाइक करो पहले भाई। हाँ मैं भी कर देता हूँ। 40 likes कर दो आप लोग। 40 likes का टारगेट रखते हैं। हाँ शरदत 18 जनवरी को दे देना, ठीक है ना? 20 जनवरी नहीं, 18 जनवरी को कर देना, ठीक है ना? 18 जनवरी को हम लोग करवाएंगे, वो थोड़ा सा टफ होगा, बस ये ध्यान रखना। तो उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जाएगा, बट ट्राई करना 18 जनवरी को करने का, ठीक है? थोड़ा टफ टेस्ट होगा, लेकिन वो चलो मैं शेड्यूल सब बता दूंगा यूट्यूब पे कि कब क्या आएगा। प्रशांत, sir, I completed revision of networks, skipped AC part, digital अरे control, इसकी other subjects revision is remaining. 8 days plan for complete, 8 days plan for the complete subject. हाँ जनवरी, हाँ 18 से कर देना, 18 जनवरी 18 से स्टार्ट फ्रॉम 18 20। प्रशांत। हाँ 18 जनवरी से कर देना आप भी, ठीक है प्रशांत? और एसी पार्ट वगैरह छूट गया तो कोई बात नहीं, अभी चिंता मत करो उन सबकी। हाँ अभी बस ये टेंशन बात मत ध्यान रखना करो। कि एसी पार्ट का सवाल आएगा तो वो रेजोनेंस में होगा भाई सर्किट, ये बस ध्यान रेजोनेंस रखना। और कॉम्प्लेक्स पावर वो रेजोनेंस सर्किट रेजोनेंस में होगा, मतलब ऑलमोस्ट 99.9%, ठीक है, जम के 99%। वैसे सर्टिफिकेट लाइक प्रशांत तो हुआ पहले भी सेशन ज्वाइन करता था, जहां तक मेरे को याद है। है, मेरे अभी को याद नहीं है। हम्म, अच्छा इज आल्सो हैविंग मॉक ये इसका टेस्ट, भी हो रहेगा यार, फिर अपना डाउन तो नहीं चला जाएगा कहीं। हैं? तब अपने को अपने 17 कंप्लीट करना पड़ेगा, 17 करना पड़ेगा 17 कोई हिसाब से नहीं करूंगा मैं, 18 तो करवाएंगे। देखो शरदर, देखो हमारा भी टेस्ट होगा, इसका भी होगा, अब आप बताओ किसका टेस्ट लिखोगे आप? ठीक है यार, मतलब ऑब्वियसली एस वाले ही ज्यादा लिखा जाएगा, बट ठीक है, बढ़िया है। हाँ हम भी 18 को करवाएंगे, लेकिन ठीक है 18 को एक फुल लेंथ मॉक करवा देंगे हम लोग भी। या पहले करें अनीश? 17 कर लेते हैं, 17 कर लेते हैं। शरदर टाइमिंग क्या है इस वाले टेस्ट की? टाइमिंग बताना आप, मेरे को आइडिया नहीं है टाइमिंग का। नहीं एक दिन में 2 दे नहीं पाएंगे वो लोग, एक दिन में 2 दे नहीं पाएंगे। लेकिन उस दिन भी एनपीटीएल का मॉक टेस्ट था यार, जिस दिन अपन ने कॉन्सेप्ट एक्स करवाया था। 500 बंदे तो फिर भी आ गए थे। हाँ वो एमपीटीएल का था ना, ये तो एस का है, तो मतलब ये भी है, हाँ, सही बात है। लेकिन ये वो वाला है 100 रुपए वाला, वो 100 रुपए देके जो करवाते हैं ना टेस्ट। अच्छा वो वाला है, हाँ हाँ, पता वही नहीं। वाला होगा पक्का, क्योंकि सदा ये ये फ्री फ्री है वाला क्या, नहीं है। या फ्री है क्या, क्या नहीं है नहीं, फ्री सदा? वाला नहीं करवाता, फ्री वाला करवाता ही नहीं है इस। तब तो कोई दिक्कत वो नहीं, 100 रुपीज वाला है। तब तो करवा सकते हैं। I guess, yeah. Any query is remaining there. Sir, I got 14 marks last time. Now my preparation are 2 weeks. Say some points to qualify the exam. Qualify the exam. You focus on network and analog. मैथ्स एंड Sorry, you एप्टीट्यूड focus नेटवर्क, on मैथ्स math एप्टीट्यूड। aptitude network. Math aptitude network. Sir, anywhere if we are going for exam,
or mock test should we not divert ourselves for sometimes from that exam to refresh and go, or just full concentration on क्या क्या कर रहे हैं यार? Anywhere, if we are going for a exam or mock test, should we not divert ourselves for some time from that exam to refresh and go, or just full concentration on just a I day think before the examination you are not going to study anything, that's it. हाँ. But Just a day during before you. the exam, you will have to give full concentration during the 3 hours. Okay, you cannot give breaks during the examination. अरे वाह भाई, हम बताया ना फैन आ गए सर. भाई, क्या अच्छा फैन आ गए, फैन आ वो गए। अच्छा अच्छा. अरे इसको जाने दे, वो फ्री फॉर ऑल है, वो 18 जन 2:30 PM फ्री फॉर ऑल है. हाँ, फ्री फॉर ऑल है यार। ठीक है, 2:30 है, अपने सुबह करवाएंगे। ठीक है, अरे एक दिन में 9:30। नहीं दे पाएंगे, एक दिन नहीं दे हाँ, पाएंगे. कोई नहीं दे तो नहीं दे भाई, मैं 9:30 को करवाऊंगा भाई सुबह। भाई ठीक है 9:30 9। मेरे को खुद भी तो अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 9:30 की. मैं खुद ही अभी उठता ही हूँ मैं 12 बजे, उसकी प्रैक्टिस तो करनी अपन को उठने पड़ेगी. की क्या जरूरत है, अपन तो टेस्ट डालेंगे ना, कोई चांस ही नहीं है मैं 9:30 को नहीं उठा नहीं पाऊंगा। नहीं, मेरे को मेरे को प्रैक्टिस करना अच्छा हाँ, पड़ेगा, मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हाँ, ठीक है चलो. अरे भाई अ, सर के फैन आ गए चलो जाने भाई, देते सर के हैं, फैन आ गए। जाने देते हैं. जान देते हैं। चलो एंड करते हैं. वेबसाइट क्यों नहीं चल रही? अरे ये चल वेबसाइट का रही है इशू भाई. कैसे आ रहा है? अरे चल रही है। लोग यार पता नहीं कॉलेज वाईफाई पे क्यों नहीं चलता भाई. कॉलेज लोग अपना सर्वर ब्लॉक किए, क्या किया, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. मतलब वेबसाइट चल रही है, देखो मैं खुद ओपन किया वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट चल रहा है आराम से. यू जस्ट चेंज टू मोबाइल डेटा तो चल जाएगा उससे. समटाइम्स कॉलेज वाईफाई डज नॉट वर्क. IN 930 को है ना, ठीक है, तो हमारा ECEE IN का तो नहीं होगा, ECEE का 930 से होगा. ठीक है, कोई नहीं. ठीक है, थैंक यू गाइस, वी विल एंड द सेशन. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ अस. ओके गाइस, या थैंक यू एवरीवन।